Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on near-peer. In the previous lecture we discussed nationalism and today we're going to discuss about public opinion. Public opinion broadly is the collective opinion of the people in any given society. It's what people desire, लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं, क्या preferences हैं, what they think about, their political views, all that can be uh, called public opinion. Now, public opinion के ऊपर philosophers ने और political theorists ने काफी emphasis किया because we know that democracy has generally been accepted as the better form of government. और जैसे जैसे हम political science का course पढ़ते हैं, we know that the general trend of history has been towards giving more freedom to people, recognizing their rights, giving legitimacy to the authority, or accepting authority on legitimate grounds. Hence, लोगों की opinion और लोगों की राय बहुत अहम है इस पूरे context के अंदर जो हम पढ़ी है अब तक हमने. So उस context में there are certain important theorists that we just need to quickly go through. The philosophical conception about the importance of public opinion in the eyes of Montesquieu, who wrote the book The Spirit of the Laws, is that he basically posited that laws of the country should conform to the national character. That is to say, perfect government वो government है जो कि अपनी जिस वो government है जो अपने लोगों की नुमाइंदगी सही तरीके से करती है, जो लोगों की विशेष को सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑट टू रिफ्लेक्ट द नेशनल कैरेक्टर. ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट या पॉपुलर विल का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पहले, ये उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है. The next important philosopher is Jean-Jacques Rousseau, who wrote the book The Social Contract. और social contract की philosophy हमने आगे भी जाके पढ़नी है. हमने briefly पहले पढ़ी थी जब हमने state नेचर एंड इमर्जेंस ऑफ स्टेट पढ़ा था. उसके अंदर हमने हॉब्स की स्टेट के बारे में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ नेचर होती है जिसके अंदर कोई लॉलेसनेस है और उसके बाद ह्यूमन बींग्स कम टुगेदर एंड दे डिसाइड टू गिव देयर अथॉरिटी टू अ थर्ड पार्टी एंड देन वो थर्ड पार्टी जो है इन्फोर्स करती है ऑर्डर को और स्टेबिलिटी को. तो रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन फिलोसफर्स एज वेल, इन हिज फिलोसॉफिकल कंसेप्शन, लोगों की चूंकि लोगों ने मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसीलिए द गवर्नमेंट, द लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज द वन व्हिच रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द मेजॉरिटी, विल ऑफ द पब्लिक, जो पब्लिक ओपिनियन को अपने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर करती है. So, according to Rousseau, if a government does not reflect the general will of the people, then such a government should be deposed and उसकी जगह दूसरी गवर्नमेंट लेके आई जाए जो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करे. Now, how do you measure public opinion? Measuring public opinion is fairly simple. It's done through different ways. Of course, it's never measured accurately or perfectly. There are always certain issues with the way public opinion is measured. The first one is polling, जिसके जरिए आप जो polls या आपके surveys वगैरह और ये होते हैं उसके अंदर लोगों का पब्लिक ओपिनियन डिटरमिन किया जा सकता है रिगार्डिंग एनी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इशू, जिसके अंदर क्वेश्चंस फ्रेम करके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हो सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है. इलेक्शंस आर अ गुड वे ऑफ मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन बिकॉज ये लोगों की पॉलिटिकल लीनिंग्स के बारे में आपको बताता है कि हु डू पीपल like the most. So elections are a good barometer of measuring the political values of the society because there are different political parties, different groups, different contestants who are representing different agendas, and whoever gets elected, it can be understood कि वो लोग उनको कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं. The third is the referendum and initiative. ये दोनों similar तरीके से use होते हैं, but the mode is different. In referendum, a piece of law or a question is posed to the public, और अगर लोग उसको accept करें तो वो it is turned into law, और अगर ना करें तो उसको reject कर दिया जाता है. So for instance, Brexit referendum, जो Brexit vote था वो popular referendum के जरिए हुआ था. लोगों से पूछा गया था whether they want to stay within European Union or want to get out of European Union. So Brexit is a good example of this. Recently टर्की में recently constitutional amendment के ऊपर referendum हुआ है. Initiative के अंदर the people get certain number of signatories, या अगर एक खास number each हो तो then it is proposed within the
विद इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के वो फिर उस पर लेजिस्लेट करें. सो दैट इज itself is a good barometer of measuring what people require. So अगर लोग इकट्ठे होकर एक चीज को पार्लियामेंट के सामने पेश कर रहे हैं या इतने सिग्नेटरीज ले आ रहे हैं कि उसे पार्लियामेंट में पेश करना जरूरी हो गया, तो इट मींस दैट पीपल रियली केयर अबाउट दैट इशू. The last is the civil society, non-governmental organizations and interest groups. ये वाले organizations represent करती हैं अमूमी तौर पे जो सोसाइटी के इंटरेस्ट लाइक ह्यूमन राइट्स या कम्युनिटी के जो मसले होते हैं जो कि अदरवाइज इतने सामने नहीं आते, इनको रिप्रेजेंट करते हैं. माइनॉरिटी ग्रुप्स के, मार्जिनल ग्रुप्स के, जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो इट रिफ्लेक्ट्स दोज ओपिनियंस एज वेल ऑफ द सोसाइटी. सो दीज are all the ways in which public opinion can be measured. Then important another thing is that public opinion is never completely independent from outside or external influences. It is always influenced from the outside. हम क्या टीवी पे देखते हैं, हमें क्या बताया जाता है, हम किस तरह सोचते हैं, ये सारी चीजें हमारे पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती हैं. So broadly I've categorized them into 6 categories. The number 1 being the politicians and political parties. Political parties की बहुत ज़्यादा educative value होती है. Educative value in the sense that they educate public about political issues. They and political leaders, जो आपके politicians होते हैं, they have the ability to make certain things as important issues and make certain things as non-important issues. So politicians and political leaders play a huge role in shaping the political values or political culture of any country. Second is opinion leaders. Opinion leaders में आपके religious leaders भी आ जाते हैं, इसमें आपके entrepreneurs आ जाते हैं, ऐसे लोग जो influence रखते हैं, जो लोगों को जो बात बताते हैं उनकी बात सुनी जाती है. ठीक है. सो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर दी ओपिनियन लीडर जो किसी भी सोसाइटी का ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. द थर्ड इज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. आपका पर्सनल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग योर ओपिनियन. सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर पुअर you would support high taxes on the rich because then the state will be able to get that tax and redistribute that tax amongst the poor को facilities मिलेंगी. But if you're super rich you would not favor tax because वो आपको ज़्यादा charge होता है and then you can't make as much money as you want. So your socioeconomic status a lot of times impact how you think about certain issues, and not just socioeconomic status. You can also say that all kinds of statuses that a person has, whether you're male, whether you're which ethnicity you have in a country, what's your sect is. So all those things influence your public opinion in that regard. The fourth thing is कि अगर हम नेशनल नेशन की कलेक्टिव ओपिनियन की बात करेंगे, वो कभी कभी एकदम जो चेंज होता है या बनता है, उसके अंदर मेजर इवेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट और सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए. सो फॉर इंस्टेंस बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हुई, हॉलोकॉस्ट का इंसिडेंस हुआ, जर्मनी की नाजी ऑक्यूपेशन की वजह से पब्लिक ओपिनियन यूरोप में बिल्कुल एंटी वॉर हो चुका था बिकॉज दे हैड सीन सो मच हॉरर्स ऑफ वॉर, दे हैड सीन द टोटल वॉर in front of their eyes. That is why their public opinion was completely changed, and it almost completely changed, and it had turned vehemently anti-war. The fifth is culture and religion. आपके माशरे की सकाफत क्या है, मजहबी इक़दार क्या है, आपकी सकाफती इक़दार क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके हाँ जो सोच है उसको वो शेप करती है और वो उस पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है. The last being mass media, no brainer because media, इसके अंदर प्रिंट मीडिया भी आ जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाएगा और इसके अंदर सोशल मीडिया भी आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट में बिलखुसूस. ये सारे के सारे मीडिया इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन को. वो दे सेंसेशनलाइजेशन भी उसके अंदर होती है, उसके अंदर प्रोपेगेंडा भी होता है, उसके अंदर झूठ सच दोनों होते हैं. तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों के पब्लिक ओपिनियन को और इनकी वजह से पब्लिक ओपिनियन बदलता है, बनता है, चेंज होता है. बट नॉनदलेस पब्लिक ओपिनियन इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल ही पॉपुलर सॉवरेंटी पे रेस्ट करता है. वो ये कि अवाम के मर्जी के मुताबिक कवानीन बनेंगे, वही कवानीन बनेंगे जो अवाम चाहती है. तो हैंस पब्लिक ओपिनियन इज वेरी वेरी फंडामेंटल in shaping the public opinion of in a democracy. तो ब्रेक्सिट इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि
डेमोक्रेसी की एक्सेस के ऊपर कि इवन दो पब्लिक ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, बट इसका मत कभी कभी जब देर इफ देर इज एन एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, देर इज एन एक्सेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इट कैन समटाइम्स गो contradictory to the interests of the society, because every objective study shows that UK is better off within European Union, लेकिन एक बड़ी popular demagogic और populist narrative की वजह से they voted out of the European Union. So this is a critique that public opinion should not be the sole driver of public policy. तो अगर public opinion sole driver होगा public policy का, तो आपकी पब्लिक पॉलिसी सबसे ऑप्टिमल नहीं बनेगी. इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपर्ट्स को छोड़ देनी चाहिए. सेम लॉजिक अप्लाइज टू द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, दैट हाउ बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट फैशन दैट डोनाल्ड ट्रम्प वाज यूजिंग डेमोगॉगरी, एंड डेमोगॉग्स पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू यूजिंग रेटरिक और इमोशनल्स और सिंप्लिफिकेशन और गलत फेक न्यूज फैलाकर, और इसके जरिए उन्होंने कैसे लोगों का पब्लिक ओपिनियन जो है वो शेप किया. फेक न्यूज आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. थर्ड इज द यूज ऑफ बिग डेटा. सो कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल से हमें पता चला कि देयर आर बिग एंड डेटा एनालिटिकल फर्म्स जो कि हमारा डेटा इस्तेमाल करते हुए दे आर गेटिंग रिच. सो what we are purchasing online, where we are going, who we are adding on Facebook, all these data is being collected by these firms, and through this they understand about us, और उस तरह की हमें फिर टेलर मेड वीडियोस और एड्स और शॉपिंग एड्स और ये सारी चीजें आती हैं ताकि वो हमारी हमें ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और अपनी सेलिंग. सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर manipulating and maneuvering public opinion to the point that it's that the elite, that the powerful, that the super rich have so much control over our data, over our understanding about ourselves, that they are able to manufacture our public opinion through conditioning. So these are all the important things. इसको आप जरा खुद भी जरा डिटेल में देखेंगे कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या था, बिग डेटा क्या है, कैसे लोगों के पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है थ्रू यूजिंग सोशल मीडिया और फेक न्यूज, कैसे बड़ी फॉर्मेटिव है in shaping public opinion in today's world. These are things which ordinary candidates will not necessarily write, and these are very, very new issues. So if you write these things in the critical analysis, it will be able to help you get more marks.